Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, today I will deliver lecture number 3 of unit number 11, Changes in Living Things. So, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lectures. We were discussing about the different life stages of plants and animals. We discussed about plants right now कि plants जो हैं ये भी living things हैं और किस तरीके से जो है जब आप ज़मीन में बीज को बोते हैं then a tiny plant comes out of it which is called germination of the plant and then it grows. New leaves come out of it, new branches come out of the plant, and it starts increasing its height, its stem starts growing, getting mature more and more, and then it starts developing flower. And at this time, from growth and development, it enters into a new stage which is called reproduction. In reproduction, it bears fruits or flowers. In sunflower, we discussed that the reproduction stage has two phases, sub-phases. One is in which it develops flowers, and in the next in which it develops seeds. And then when the seed ripens after the 30 days, then it dies off. So this is what we discussed about that. It is a cycle. And then the seeds are capable enough to grow into a new plant again. So my dear students, this is the life cycle of plants. में हमने उसकी different stages जो हैं उनको in detail पढ़ा है. Today we will discuss about the life stages of animals. So the students will be able to compare different stages of lifespan of plants and animals from pictures through observation, video recording, etc. So आपके जो teachers हैं आज आपको the students will be able to compare the life cycles of plants and animals कि किस तरह animals और plants जो हैं both are living things and how they are different when we talk about their life cycles. So आप pictures के through, videos के through, live भी आप बच्चों को जो है ये examples के through जो है ये life cycles जो हैं वो समझा सकते हैं. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. It is He who sends down water from the sky. With it we produce vegetation of all kinds, from which we produce green substance, out of which we produce grain in clusters, and out of date palms from their spatches come forth clusters of dates hanging low and near, and gardens of grapes, olives, and pomegranates, each similar, yet different. Look at their fruits when they begin to bear fruit, and then ripens thereof. Behold, in these things there are signs for people who believe. So, my dear students, Allah Ta'ala ने समझने वालों के बेतहाशा निशानियां हमारे लिए दुनिया में बनाई हैं कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जब वो ज़मीन पे पड़ती है तो मुख्तलिफ बीज जो हैं वो पौधों में तब्दील हो जाते हैं, फिर ये बड़े होते हैं और इसके ऊपर गुच्छों की तरह जो है वो फल और फूल जो हैं वो निकलते हैं इनके ऊपर. देखने में बेशक आपको तमाम पौधे एक जैसे हरे भरे लगते हों, लेकिन जो इनके फूल और फल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होते हैं. So my dear students, now it's time for pre-reading question. Quickly tell me what are the life stages of a plant. क्योंकि हम plant के बारे में completely पढ़ चुके हैं. Quickly think कि plant की life stages कौन कौन सी हैं. सबसे पहले the seed, then when it is sown into the soil and it finds all the necessary condition, it germinates, and after the germination the growth and development starts, and the last process is the reproduction. So my dear students, here you can see different life stages of plant. So my dear students, now is time for an activity. For the activity, you will move towards the project number 1. Observe the life stages of sunflower plant. It is given on page number 102. Quickly open this in your books. I hope everybody has opened the page. Let's quickly look at the instructions first. So my dear students, the material that is required is seeds of sunflower plant, garden troll, soil, water. What to do? Sow the seeds into the soil using a garden troll. Observe when does it germinate. Note the date and day. Click the picture and paste it in your science notebook. So my dear students, सबसे पहले हम ये वाला जो है इसको understand करते हैं कि पहले भी मैंने आपको plant जो है वो कैसे how to sow the seeds into the soil मैंने आपको ये तरीका सिखाया था. हमने lecture number 1 में एक practical भी किया था. So for this practical you need sunflower seeds. If you find them, अगर मौसम है, weather है, तो you can find the sunflower seeds easily from the market. Purchase them, ask your teacher to get it for you. और इसके बाद teachers जो है वो बच्चों को
स्कूल ग्राउंड में लेकर जाएं एंड देन दे नीड अ ट्रोल, और उसके बाद बीज जो है उसको ज़मीन में लगाएं, कवर इट विद द सॉइल एंड देन वाटर इट। उसके बाद आपने जर्मिनेशन, व्हेन इट्स जर्मिनेट्स आपने वो डेट और डे जो है वो नोट करना है। पिक्चर भी क्लिक करें और अपनी नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट करें। ऑब्जर्व विच पार्ट डेवलप्स फर्स्ट, आपने ये नोटिस करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो सबसे पहले डेवलप होता है। देन कीप वाटरिंग द प्लांट डेली, ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नोट डाउन द चेंज इन हाइट ऑफ द स्टेम आफ्टर ईच वीक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने उसको पानी भी देना है, उसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट करनी है कि उसके अंदर क्या क्या ग्रोथ जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले यू विल फाइंड न्यू लीव्स विल कम आउट, इसके बाद आप देखेंगे कि उसका स्टेम ग्रो हो रहा है, आप उसकी भी मेजरमेंट को अंदाजा लगाएं कि एक हर हफ्ते बाद आपने जो है वो स्केल से आप उसको चेक करें कि कितनी इंक्रीज हुई है। देन नोट द चेंजेस इन द लीफ साइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपने नोट करना है। नोट द डेट व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लावरिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स, फिल द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसके बाद आपने जिस दिन वो फ्लावर उसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे एंड इट विल स्टार्ट बेयरिंग सीड्स, आपने वो दोनों डेट्स भी नोट डाउन कर लेनी है। एंड यू विल फिल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी दैट व्हेन यू विल सो द सीड, सबसे पहले आपको जो नजर नहीं आती चीज वो होती है इसकी रूट। इसकी रूट ग्रो करती है एंड आफ्टर दैट अ टाइनी शूट विल come out, this is germination and then it will start growing, leaves निकलते जाएंगे, growth and development start हो गई है। फिर आप नोटिस करें कि कब इसके ऊपर सबसे पहले फ्लावर लगा, आप यहाँ पे डेट नोट करेंगे। then you will start noticing कि इसकी जो petals है they will fall off, और जब ये फॉल ऑफ हो जाएंगी तो इधर सीड्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे आप इसकी डेट नोट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे जो है फुली द सीड्स विल राइप एंड द फ्लावर sunflower plant will die off. So this is the life cycle of the sunflower. आप इसको खुद प्लांट करें, बच्चों से प्लांट करवाएं and then notice the dates and fill them in this table. Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक्स तक आपने इसको कंटिन्यूस जो है वो ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपने जर्मिनेशन की डेट यहाँ लिखनी है, व्हेन इट विल जर्मिनेट, जिस दिन आपने बीज बोया था वो डेट भी आप लिखेंगे। देन डेट ऑफ फ्लावरिंग आप इधर नोट करेंगे। यहाँ आप तमाम वो साइजेस जो हैं, स्टेम साइज एंड लीफ साइज आप मेजर करते जाएंगे। फिर हाउ मेनी डेज फ्लावर्स अपेयर्ड, कितनी देर तक जो है वो फ्लावर्स जो है वो अपेयर हुए। हाउ मेनी डेज सीड्स फॉर्म, कितनी दिन में बीज जो है वो बने। विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल वॉज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी जो है वो कौन सी जो है वो स्टेज थी इनकी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी, जर्मिनेशन की थी, रिप्रोडक्शन की थी। रिप्रोडक्शन में भी 2 फेजेस हैं, उनमें से कौन सी सबसे बड़ा फेज था, आपने वो भी यहाँ आंसर करना है। डिड द सीड्स इनिशिएट लाइफ साइकिल अगेन, दोबारा आप उन सीड्स को जो है जो आपके सनफ्लावर प्लांट से बनेंगे उनको सो दम अगेन एंड चेक if they will germinate again. They will germinate because this is the continuity of life and this is called the life cycle. So this is how you will perform your project in your school. Okay, for the evaluation, the listening and speaking questions, what is germination? Very good. When a tiny shoot comes out of the soil, this is a baby plant comes out of a seed, that is called germination. How much time a sunflower seeds needs to germinate? It needs 5 to 12 days to germinate. So my dear students, here's the worksheet for your homework. You can simply download it from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class at the top and answer the following questions. What is meant by germination? Good, you will write it down here. What does sunflower plant, when does sunflower plant develop flowers? After how many days? After 5 weeks it develops flowers. And what happens in the phase of seed development in sunflower plant? जब seed develop हो रहे होते हैं तो क्या होता है? The petals fall off, the seed starts ripening in the disc, and then in 30 days they ripe, and then the plant dies and the seeds are ready to be sown again into the soil. Explain the process of growth in sunflower plant. How does the growth and development occur in sunflower plant? Quickly answer that. You will write it down also. Very good. The new flowers, new branches, the stem starts growing, it starts increasing in size, leaves and stem both. So this is the growth process in sunflower plant.
So, my dear students, today we learned that the sunflower life cycle completes in 3 consecutive stages. After the completion of its reproductive stage, plant starts dying. So, my dear students, ये आप project practically perform करेंगे with your teacher, with your class fellows in your school garden, or you can also perform it in at your homes with your parents. You will definitely enjoy it. आप अपने parents को बताइएगा that how germination occurs, what is growth and development, what is reproduction. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. Allah Hafiz.